Hello friends, once again welcome in our online class. Today we are moving towards 8th lesson of history, civil disobedience movement. Listen it carefully. After the resolution of complete independence was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement. Before beginning this movement, Gandhiji put up various demands in front of British government. One of the important demands was to cancel the salt tax and monopoly of British government for manufacture of salt. But because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch Satyagraha all over India by breaking the Salt Act. Friends, we very well know about British and British policy. And therefore, in our India, many freedom fighters, many Indian leaders of that era, they took various actions against British to got independence. In it, when the Lahore session of Indian National Congress was taken place, in that Lahore session, the resolution of complete independence was passed. In that same session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement. In the beginning of this movement, Gandhiji put up different demands in front of British government. His one of the major demand out of British government to cancel tax of salt and monopoly of manufacturing salt of British. But these demands of Gandhi were rejected by British, and therefore Mahatma Gandhi decided to start Satyagraha all over India by breaking the Salt Act. दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब तक हमने हमारे पूरे इस स्वतंत्र संग्राम की इस युद्ध में हमने देखा है कि अब तक भारत की जो स्वतंत्र सेनानी उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपनी जो लड़ाई है वो अपने तौर तरीके से की है। और इसमें हमारे इस 8वें लेसन में जो लाहौर सेशन पास हुआ, इस लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि भारत को पूरा स्वराज मिले। और यही नहीं, उसी समय महात्मा गांधी जी ने ये तय किया कि वो उस समय में असहकार चळवळ उसे लाएंगे। और उन्होंने ब्रिटिश के सामने अलग अलग से डिमांड रखे और इन डिमांड्स में उन्होंने जो साल पे लगाए गए पाबंदी, साल पे लगाया गया टैक्स, उसे रोकना था। यही नहीं कि इसके साथ साथ जो ब्रिटिश की मनमानी थी, उस मनमानी को भी रोकना ये उनका काम था। और इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश के सामने ये जो अपनी खुद की मांगे रखी थी, इन मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी की ये जो मांगे खारिज की गई, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो पूरे भारत में साल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह उठाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। I repeat, salt is an important ingredient in the food of common people. Hence, it was unjust to impose tax on an essential commodity like salt. Therefore, Gandhi started the Salt Satyagraha. Salt Satyagraha was symbolic. The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and Satyagraha.
Friends, we learned that salt is an important ingredient in our food, and tax which was imposed by British government on salt. It was very cruel movement, and therefore Mahatma Gandhi started salt satyagraha. Salt satyagraha was symbolic. It was the extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of British government through peace and सत्याग्रह. दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो नमक यानी कि साल्ट, ये हमारे हर दिन के खाने की एक अहम चीज़ है, और इसके ऊपर टैक्स लगाना ये ब्रिटिश की सबसे बुरी पॉलिसी थी. ये सबसे बड़ा क्रूर स्टेप था, और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उनके इस साल्ट के ऊपर लगाई गई पाबंदी और साल्ट के ऊपर लगाया गया जो टैक्स है उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किए. और इन सत्याग्रह शुरू करने के बाद ये सभी तरफ एक सिंबॉलिक रहे, और यही नहीं तो इस सत्याग्रह के चलते महात्मा गांधी जी को बताना था कि जो क्रुएल्टी जो ब्रिटिशों ने अपनाई है उसको तोड़ना है, और यही नहीं तो इसके साथ साथ जो उनके ऑपरेसिव मेजर्स है इनको भी तोड़ना है. और ये जो सत्याग्रह चलाए गए ये सारे शांति और सत्य की राह पे थी. Ahead of it, Gandhi chose Dandi, a seashore in Gujarat, to begin the Salt Satyagraha. On 12 March 1930, Gandhi set out from Sabarmati Ashram with 78 followers for launching the Salt Satyagraha. A distance of approximately 385 kilometers was covered on foot, and Gandhiji delivered speeches in the villages on the way. Through the speeches, Gandhiji appealed to people to be fearless and join the civil disobedience movement. Due to Gandhiji's speeches, message of civil disobedience movement spread everywhere, and a favorable atmosphere was created. On 5th April 1930, Gandhiji reached Dandi. On 6th April, Gandhiji broke the Salt Act by picking up the salt lying on the seashore of Dandi, and the civil disobedience movement started all over the country. Friends, we very well know that Mahatma Gandhi used to use the way of Satyagraha, and therefore he was also decided to start Salt Satyagraha, and therefore he decided to place Dandi, a seashore which is situated in Gujarat, for the Salt Satyagraha. On 12 March 1930, Gandhiji set out from Sabarmati Ashram with his 78 followers for launching Salt Satyagraha. Distance of approximately 385 kilometers was covered on foot, and Gandhiji delivered speeches in the villages on the way. Through the speeches, Gandhiji appealed to people to join the civil disobedience movement. Due to Gandhiji's speeches, message of civil disobedience movement spread everywhere, and favorable atmosphere was created by Gandhiji. Many followers, many people joined Dandi March. At last, on 5th of April 1930, Gandhiji reached Dandi with his followers, and on 6th of April, he picked salt in his hand, which is lying at the Dandi seashore, and he broke down the Salt Act by picking up the salt
And from that moment, civil disobedience movement started all over the country. दोस्तों, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के पास जो सत्याग्रह नाम का एक वेपन था, ये सबसे बढ़िया तौर तरीका था। और उन्होंने इस साल सत्याग्रह के खिलाफ उन्होंने अपने कदम उठाए, और इसी कारण उन्होंने जो दांडी, एक जो समुद्र किनारा है जो गुजरात में बसा हुआ है, उसे चुना। और उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को वो 385 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अपने पैरों से चलकर तय करने का उन्होंने ठान लिया, और वो इस दांडी मार्च को निकले। और जब दांडी मार्च को निकले, जब रास्ते में लगने वाले सभी जो गांव थे, उन गांवों में वो स्पीचेस डिलीवर करते थे और लोगों को बताते थे कि निडर बनो और इस संग्राम में, इस असहकार चळवळ में आओ, जुड़ जाओ। लोग को इससे मोटिवेट हुए और इससे जो सत्याग्रह और असहकार जो चळवळ है, इसके लिए असहकार जो मूवमेंट है, इसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जुड़ते गए। और इस तरह महात्मा गांधी जी और उनके फॉलोअर्स 5 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने अपने हाथ में जो दांडी सीशोर था, समुद्र तट था, उस पर से नमक अपने हाथों में उठाकर जो नमक के ऊपर जो कायदे बनाए थे, उन कायदों को तोड़ा। और इससे पूरे भारत में ये जो असहकार जो मूवमेंट है, इसको बढ़ावा मिला और सभी भारत में इस मूवमेंट को छेड़ दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट इज द पेशावर सत्याग्रह। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, Khan Abdul Ghaffar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. He was also known as Frontier Gandhi. He had founded the organization called Khudai Khidmatgar on 23rd April 1930. He started Satyagraha at Peshawar. The town was in the hands of the Satyagrahis nearly for a week. The British government gave orders to the Grawal regiment to carry out open firing on the Satyagrahis, but Chandra Singh Thakur, an officer of Grawal regiment, refused to open fire. He was court-martialed and was given a severe punishment. The British government found itself in a difficult situation due to Satyagraha launched by Mahatma Gandhi on 4th May 1930. Gandhi was arrested. Suppressive measures were undertaken all over the country. There was protest all over the country due to the arrest of Mahatma Gandhi. Friends, we learned that the Peshawar Satyagraha. In the northwest frontier, Khan Abdul Ghaffar Khan, one of the loyal follower of Mahatma Gandhi ji, he was also known as Frontier Gandhi. He launched Satyagraha at Peshawar. He has also started organization which is namely Khudai Khidmatgar. When he started Satyagraha on 23rd April 1930 at Peshawar, he took all charge of whole town in his hand for a week. The British government gave orders to Grawal regiment to make open fire on the Satyagrahis. The regiment's officer, named Chandra Singh Thakur, he was refused to make open fire on Satyagrahis, and therefore he was court-martialed and he was faced
severe punishment from British government. At last, it is very difficult to handle the conditions in our nation, and therefore British government on 4th May 1930 they arrested Gandhiji, and when they arrested Gandhiji, later on suppressive measures were taken by British on Satyagraha and also in India, and therefore many people they started protest Mahatma Gandhi ji all over the country. देखो, अगर हम बात करें जो पेशावर सत्याग्रह, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो दूसरे गांधी के नाम से जाने जाते थे या छोटे गांधी के नाम से भी जाने जाते थे, वो एक महात्मा गांधी के सच्चे फॉलोअर थे और उन्होंने खुदाई खिदमतगार इस संस्था का निर्माण किया था और उन्होंने 23 अप्रैल 1930 में पेशावर में सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और जब उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरा पेशावर जो टाउन है वो अपने कब्जे में पूरे वीक तक करके रखा था। और ऐसे हालात में ये सिचुएशन को हैंडल करना ब्रिटिशर्स को काफ़ी महंगा पड़ा और ये हालात उनसे काबू में रखने के लिए उन्होंने उनकी जो गृहवाल रेजिमेंट है उसके ऑफिसर्स को उन्होंने ऑर्डर दी और उसी समय में उस रेजिमेंट के जो ऑफिसर जिनका नाम चंद्र सिंह ठाकुर है, उन्होंने ये जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग करने से मना कर दिया। और जब उन्होंने ओपन फायरिंग करने से मना कर दिया गया तो उनको कोर्ट मार्शल को सामना करना पड़ा और उनको कड़ी से कड़ी सजा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई। और यही नहीं तो इसके आगे इस सत्याग्रह को किस तरह रोका जाए, और इसी कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया। और जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद और कड़ी कदम ब्रिटिशों द्वारा उठाए गए और इसी कारण भारत में सभी तरफ सभी लोगों के द्वारा महात्मा गांधी जी को बचाने के लिए जुलूस निकाले गए। यह पॉइंट था द पेशावर सत्याग्रह। दिस इज अबाउट Satyagraha of Peshawar. Now we are moving to the next point, Solapur Satyagraha. The mill workers were on the forefront in the Solapur Satyagraha on 6 May 1930. Hartal was observed in Solapur. A huge procession was organized in Solapur. The district collector gave orders of firing on the procession. Many volunteers, along with Shankar Shivdari, died in the firing. As a result, people started attacking police stations, railway stations, courts, municipal buildings, etc. The government decided martial law and the agitation was suppressed. Those who to lead in the movement, such as Mallappa Dansetti, Sri Krishna Sarda, Kurban Hussain, and Jagannath Sinde, were hanged to death. Now we are talking about Solapur Satyagraha. In Solapur Satyagraha, we observe it was taken place on 6 May 1930. Hartal was observed in whole Solapur. Huge processions were observed in Solapur. The district collector gave orders to make open fire on the procession, and in that open fire, many volunteers, along with Shankar Shivdari, died in the firing. As a result, people started attacking public places like police stations, railway stations, courts, municipal buildings, etc.
The government declared martial law and the agitation was oppressed. And in that movement, those who took lead, like Malapadhana Shetty, Sri Krishna Sarda, Kurban Hussain and Jagannath Sindhe were hanged to it. दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसे ही 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उसके 2 दिन बाद 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल पाई गई और इस हड़ताल के चलते पूरे सोलापुर में सभी तरफ बंद कर दिया गया और इस बंद के चलते पूरे सोलापुर में लोग जुलूस निकालने लगे और इस जुलूस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने ऑर्डर दिए कि इन जुलूस निकालने वाले जो सभी लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाए। और इस दौरान उनके ऊपर जो फायरिंग की गई, इस फायरिंग में जो लोग इसमें शामिल हुए थे उनमें बहुत से लोग और जो उनके साथ जो शंकर शिवधारे, ऐसे लोग इसमें मारे गए। और यही नहीं तो इससे लोगों को और लगा कि इस उनकी मूवमेंट को और बढ़ाया जाए और इसी कारण उन्होंने इस डिसोबीडियंट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, इन पर हमले बोल दिए। और यही नहीं तो इस मूवमेंट में जो लोग लीड ले रहे थे, जो लीडरशिप ले रहे थे, जैसे कि मलप्पाधन शेट्टी, श्री कृष्ण सारड़ा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे, इन जैसे लोगों को फांसी की सजा दी गई। This is about Solapur Satyagraha. Now we are moving towards next point, Dharasana Satyagraha. The Satyagraha at Dharasana in Gujarat was led by Sarojini Naidu. The police lathi charge on the Satyagrahis who came forward to break the Salt Act. The Satyagrahis silently tolerate the blows of the lathi when they were taken away for medical aid. Another batch of Satyagrahis came forward to replace them. This continued endlessly. In Maharashtra, Salt Satyagraha took place as Wadala, Malwan and Shiroda. Where there were no salt pans, the forest laws were broken. There were jungle Satyagrahas at Vilasi, Sangamner, Kalwan, Chirner and Pusad in Maharashtra. The tribal people also took part in the Satyagraha in large number. Now we are talking about Dharasana Satyagraha, and this Dharasana Satyagraha was led by Sarojini Naidu, and it was taken place at Dharasana, which is situated in Gujarat. On Dharasana Satyagraha, the police lathi charge on the Satyagrahis who came forward to break the law of salt. The Satyagrahis silently tolerate the blows of the lathi charge when they were taken away for medical aid. Another batch of Satyagrahis came forward. They took place of those who got blows on their body, and it was remain endlessly. In the same way, in Maharashtra, Salt Satyagrahas were taken place at Wadala, Malwan and Shiroda. In Maharashtra, where there are no salt pans, in such occasion, forest laws were broken. There were jungle Satyagrahas at Vilasi, Sangamner, Kalwan, Chirner and Pusad in Maharashtra were observed. The tribal people also took part in the Satyagraha in large number.
दोस्तों, अगर हम बात करें जो धारासना सत्याग्रह की, तो इस धारासना सत्याग्रह को सरोजिनी नायडू इन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने धारासना, ये जो गुजरात में बसी हुई जो एक प्लेस है जहाँ पर साल्ट पैन पाया गया, वहाँ पर उन्होंने इस सत्याग्रह को अंजाम दिया। जब सत्याग्रह चल रहा था उस समय में पुलिस लाठीचार्ज उन सत्याग्रही के ऊपर किया गया। जैसे पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए सभी जो सत्याग्रही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते थे, उनकी जगह पर दूसरे और सत्याग्रही हाजिर हो जाते थे, और जैसे ही उनको लाठीचार्ज किया जाता था उनके बाद और दूसरे, इस तरह ये जो कार्य है ये आगे बढ़ता गया और ये चलता ही रहा। और इसी आधार पर महाराष्ट्र में भी साल्ट सत्याग्रह वडाला, मालवण और सिरोदा इस जगह पर भी पाया गया है। यही नहीं तो महाराष्ट्र में जिस जगह पर साल्ट पैंस नहीं है, जिस जगह पर मिठागर नहीं है, ऐसी जगह पर जंगल कायदे तोड़े गए, जो फॉरेस्ट लॉज बनाए वो तोड़े गए। इनमें बिलासी, संगमनेर, कालवन, चिरनेर और पुसद, ये जो महाराष्ट्र की प्लेसेस है, इन जगह पर जंगल कायदे तोड़े गए। और यही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने इस सत्याग्रह में बड़े नंबर में सहयोग दिया। दिस इज अबाउट धारासना सत्याग्रह. Now we are moving towards next point. It is sacrifice of Babugenu. In Mumbai, there was agitation against foreign goods. The vehicle transporting foreign goods were obstructed. Babugenu said a mill worker from Mumbai was in the forefront. In this movement, a truck carrying foreign goods, safeguarded by the police, came in front of Babugenu. To stop the truck, he lied down on the road. Police threatened him, but he did not move from the place. Finally, he was crushed under the truck. Babugenu gained martyrdom. This sacrifice of Babugenu gave inspiration to national movement. Friends, we very well know about the sacrifice of Babugenu. In Mumbai, agitation against foreign goods was observed when the British vehicle transforming foreign goods, it was obstructed. Babugenu said mill workers from Mumbai was in the forefront in this movement. But a truck which was carrying foreign goods, safeguarded by the police, came in front of Babugenu. He was lying down on the road and he told, if you want to carry your goods from this truck, then you have to take this from my body, over my body. Police threatened him, but not listen. And at last, the truck, which was gone over Babugenu, and Babugenu sacrificed his life for the nation. From the martyrdom of Babugenu, civil disobedience movement and national inspiration was given to the people. दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो बाबूगेनु ने अपनी खुद की जो जान देश के लिए न्यौछावर की, इसके बारे में जो मुंबई में जब इस प्रकार के साल्ट सत्याग्रह और उसके साथ साथ अलग अलग से जो कायदे कानून तोड़ने के लिए जो भी कोई आवाज उठाई जा रही थी, उसमें ये जो ब्रिटिश के द्वारा जो उनके फॉरेन गुड्स है, जो ब्रिटिश में बना हुआ जो
फॉरेन गुड है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ लोग सामने आए। इसमें जो बाबू गेनू जो एक मिल वर्कर है वो भी सामने आए और उन्होंने जब ब्रिटिशर्स की जो अलग अलग चीजें जो फॉरेन से लाए हुए थे उसकी ट्रक जब आगे जा रही थी उस समय में बाबू गेनू ने उसे रोका और उस ट्रक के सामने आकर उसके नीचे सो गया और उनको बोला अगर इस ट्रक को आपको लेकर जाना है तो उसको मेरे बॉडी के ऊपर से लेकर जाना है, नहीं तो मैं इस ट्रक को आपको लेकर जाने नहीं दूंगा। उसी समय में उस ट्रक को गार्ड करने के लिए पुलिस ने उनको रोका, उनको धमकाया, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार वो जो ट्रक जो फॉरेन गुड लेकर जा रही थी, जो विदेश का जो माल था वो लेकर जाने वाली जो ट्रक थी, उसे बाबू गेनू के बॉडी के ऊपर से लेकर जाया गया और इसमें बाबू गेनू की मौत हो गई। उन्होंने अपनी खुद की जान देश के लिए न्यौछावर की और इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिली। दिस इज अबाउट sacrifice of Babu Genu. Remaining part of lesson, we will take it in next lecture. Till stay safe, stay home. Thank you.